Hey, hello all. So, this is basically an unboxing of the new edition of KVS Madan Sir's Paper 2 book. Now, ये लास्ट एडिशन थी पेपर वन की राइट और ये मैंने परचेज़ की थी इन द ईयर 2019 एंड येस एज यू कैन सी आई हैव रेड इट अ लॉट आई हैव पेस्टेड स्टिकी नोट्स और मैंने इसमें बहुत कुछ रीड किया है इसके उसको गो थ्रू बहुत अच्छे से किया है आई हैव नोटेड डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई फेल्ट एंड एवरीथिंग ओके नाउ अब जो ये बुक है द न्यू बुक इट इज़ पेपर टू बुक राइट पेपर टू कॉमर्स की बुक है एंड द प्राइस इज गिवन हियर इज 665 सो आई हैव ऑर्डर्ड थ्रू अमेजोन आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं एंड द प्राइस हियर गिवन एज यू कैन सी इज 665 आई थिंक प्रिंट थोड़ा स्मर्ज हो गया सो इसलिए यू आर नॉट एबल टू सी इट बट येस दिस इज द बुक ओके सो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट एंड लेट्स रिव्यू हाउ दिस बुक इज ओके Sorry about the sound. I'm really sorry about the sound. Okay. Fine. So, this is the book. One second. ये पेपर वन की है और ये पेपर टू की है तो दोनों पेपर्स अलग अलग होते हैं इफ़ यू आर गिविंग फॉर NTA UGC नेट कॉमर्स यू माइट नो दिस एंड दिस इज़ अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट ऑल्सो अमेजोन ऑल्सो एंड आई थिंक आपकी लोकल बुक शॉप पे भी ये अवेलेबल होगा ही राइट सो ओके पैकिंग तो बहुत सही की है Yeah. So yes, finally this is the book and new book का जो smell है वो आ रहा है right? Okay, so let me keep everything aside and let's focus on this particular book. So okay, now this is for NTA UGC NET SET and JRF Commerce Paper 2 2021 Pearson publication की है and written by KVS Madan sir. He is one of the famous authors for NTA UGC NET category especially for Paper 1 and Paper 1 का नया edition आया है वो मैंने परचेज कर लिया है बट डिलीवर नहीं हुआ है अभी तक जैसे डिलीवर होगा आई अपडेट अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो सो लेट मी गो थ्रू दिस ओके सो दिस वन इज़ द न्यू वन ये वाली नई बुक है जिसकी मैं बात कर रही थी 5th एडिशन ये वो बुक है ओके एंड जस्ट ओके वेट वन सेकेंड एक्चुअली इसको पूरी तरह खोल दूंगी तो पेजेस निकल आएंगे सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं इतना ही ओपन करूँ इसको यस दिस इज़ द ट्रिक विच आई यूज़ आई टेक अ फुल साइज स्केल और मैं 1 सेंटीमीटर ले लेती हूँ और उसके बाद उसको इतना ही खोलती हूँ सो दैट पेजेस कभी भी ना निकले किसी बुक के सो दिस इज़ द ट्रिक यू कैन यूज़ फाइन सो वन सेकेंड सो दिस इज़ अबाउट पियर्सन के बारे में दिया हुआ है एंड द सेम इन द ब्लैक वन ओके सो ये रहे हमारे कंटेंट्स कॉपीराइटेड है ये बुक स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस एनवायरनमेंट इसमें NTA UGC नेट 2020 का पेपर है राइट और बाकी सब कुछ है ये तो हमारा पूरा सिलेबस आ गया फ्रॉम फर्स्ट दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट द नेक्स्ट वन इज़ आर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग उसके बाद इकोनॉमिक्स आएगा किधर है इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स देन वी ऑल्सो हैव business finance 4th unit 5th unit statistics which I don't like at all okay and 6th unit business management and human resource management banking and finance marketing आएगा उसके बाद सॉरी 2 पेजेस एक साथ ले लिए ये रहा मार्केटिंग ठीक है मार्केटिंग के बाद वी हैव लीगल एस्पेक्ट्स वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स एंड अल्टीमेटली इनकम टैक्स ओके सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स विच आर बीइंग कवर्ड ओके so this is the preface here acknowledgements okay and one important thing I would like to note
here, if you see here carefully, there is my name. Okay, so सर ने मुझे स्पेशली बोला था थैंक्स, एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मैंने ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं की, बट येस आई फील ग्रेटफुल टू प्रोफेसर अदिति विनोदारिया अन अकेडमी. येस, आई डू टीच ऑन अन अकेडमी. सो yes, I know. I am in no way you can say मैंने बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं की है. मैंने एक्चुअली कुछ भी हेल्प नहीं की है, ना के बराबर. बट येस, KVS मदान सर इज़ जेन्युइन इनफ, और ही इज़, यू कैन से, very good enough to actually take my name in this book, which is like a shock to me or a surprise to me. And this is all about KVS Madan sir. अगर आप KVS Madan sir को नहीं जानते, he is one of the best author or the author of the best selling books in India for NTA, UGC, NET, JRF. He was a former associate director at Arni School of Business Management, Arni University, Himachal Pradesh, and he is writing books since a very very long time. और जो उनका पेपर 1 का अभी जो एडिशन आएगा, that would be the 5th edition. Okay, so this is the paper 2020 का पेपर पहले दिया हुआ है. पेपर हटा देते हैं. Okay, this will start with business environment. Let me start with here, the basics of business. ओके, बिजनेस फीचर्स, इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दिया हुआ है, एंड एवरीथिंग. नॉट बैड, गुड, वेरी गुड. एक्चुअली बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है. Actually, I was very interested in one of the topics which I like the most, economics. I just wanted to see economics, business economics. Question papers भी दिए हैं. Okay, हर चैप्टर के बाद there are like 40-50 questions. Good. Okay, ये रहा economics, definition, business scope. Okay, okay, okay. Law of demand, meaning of demand, objectives. Objectives important है, कभी कभार पूछे जा सकते हैं, देखना प्लीज. Okay, and कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ओ माई गॉड, सारे डायग्राम्स हैं इसमें. दिस इज़ वन ऑफ द गुड बुक्स, सीरियसली सारे डायग्राम्स हैं. यू विल नॉट गेट ऑल दीज डायग्राम्स इन वन बुक. बहुत मुश्किल होता है आपके लिए सर्च करना, सिर्फ इकोनॉमिक्स की बुक में मिल सकता है. आई वुड हाईली रिकमेंड ओनली बाई सीइंग द डायग्राम्स. डायग्राम्स इतने सारे आपको एक बुक में मुश्किल से ही मिलेंगे अगर आप NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हो तो. ओके, एंड इसका यू कैन से मैं फाइनल रिव्यू दूंगी थोड़ा पढ़ने के बाद. बट हाँ, on first look I can say this would be one of the must have books for the students, ताकि एटलीस्ट उनका सिलेबस एक बार पूरा कवर हो जाए. एंड ट्रस्ट मी, आई नो KVS मदान सर पर्सनली, उन्होंने इसमें अपनी पूरी मेहनत की है, पूरा रिसर्च किया है, उसके बाद आपके लिए बेस्ट क्वालिटी मटेरियल लाए होंगे. आई कुड गारंटी यू दिस. सो एनीबडी हु वांट्स टू परचेज, आई वुड हाईली रिकमेंड them to purchase this book. This is one of the best books, and by especially seeing economics I'm very impressed, because sir ने सारे के सारे images, सारे के सारे graphs उसमें incorporate किए, which is very important for the students. So make sure you buy this book and take good care of yourself, study hard. Let's meet in the next session, जहाँ पर मैं इसकी details बताऊंगी कि इसमें क्या क्या अच्छा है, बुरा तो होगा नहीं, फिर भी क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बेस्ट है जो आप इसमें से पढ़ सकते हैं. And that's it, I guess. Bye everybody, take good care of yourselves.